गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हो आप? आई केम लाइव टुडे आफ्टर अ 5 डे ब्रेक। और इस 5 दिन में मार्केट 2000 पॉइंट गिर गया है, 2200 2500 पॉइंट। ठीक है। तो हम मैं बोलूँगा नहीं कि मैं हमने क्या बोला था, वेर एज सब प्रीमियम मेंबर्स को मालूम है कि हमने क्या किया था करके। ठीक है। एनीवेज, अभी आज क्या हुआ मार्केट? आज मार्केट ने 45,500 का सपोर्ट लेके इट हैड गिवन अ रैली, एंड इस रैली में 46,200 का हाई मारा है। तो दिस इज क्लोज टू अबाउट 700 पॉइंट्स का मूवमेंट। तो 700 पॉइंट्स अपवर्ड जाने के बाद इट हैज अगेन कम बैक टू दैट सेम लेवल। सो टोटली 1400 पॉइंट्स का रैली दिया है मार्केट। 700 अप, 700 डाउन, और फिर क्लोज्ड एट -350 पॉइंट्स। ठीक है। तो अगर ओवरऑल देखेंगे तो दिस इज द मूवमेंट विच इज हैपेंड इन मार्केट। तो कल के लिए क्या एक्सपेक्ट करना है? कल टुमारो आई एम एक्सपेक्टिंग अ गैप अप ओपनिंग। नाउ व्हाई आई एम एक्सपेक्टिंग अ गैप अप ओपनिंग? बिकॉज ऑफ निफ्टी। बैंक निफ्टी में इट्स गोना बी अ फ्लैट ओपनिंग, whereas in nifty we are expecting a gap up opening. ठीक है। why I'm expecting a gap up opening? Because of candle closing above cpr. Okay. So in above cpr candle closed, nifty can open gap up टू बिटवीन 21,560 से लगा के 21,540 तक ये गैप अप ओपनिंग दिखा सकता है। ठीक है। विच इज क्लोज टू अबाउट 90 पॉइंट्स गैप अप। ठीक है। तो दिस इज व्हाट वी कैन सी इन निफ्टी टुमारो, अ गैप अप ऑफ 90 पॉइंट्स। इस गैप अप में क्या होगा? सिंस इट इज अ बेयरिश ट्रेंड, बिकॉज आपने देखा होगा ऊपर के सीपीआर से नीचे के सीपीआर डिसेंडिंग सीपीआर आया है। इट्स अ नैरो सीपीआर, एंड द डिफरेंस बिटवीन प्रीवियस डे हाई एंड R1 is less. So we might see and the candle has closed above the CPR, so we might see a gap up opening tomorrow. Now what to expect? अगर gap up opening हुआ market, तो we will see how it reacts to 21,560 level. ओके। अगर 21,560 के ऊपर क्लोजिंग दे दिया, एक 5 मिनट का कैंडल, जस्ट 1 5 मिनट का कैंडल अगर इसने ओपनिंग क्लोजिंग दे दिया इसके ऊपर, तो अवर नेक्स्ट टारगेट टू वॉच आउट विल बी 21,635. ओके गाइस, so this will be your next target above 21,560. Okay, and then we will try to touch 21,680 again. Okay, so now I am no longer bearish in market. I was expecting a crash, and the crash came in, but I'm still not bear. What do you say? I'm not bearish in market right now. I am not bullish either. Okay, for me to become bullish, I need a closing above 21,680. Most important level. इसके ऊपर अगर closing देगा तो then I will think of buying. लेकिन अगर इसने 21,300 के नीचे क्लोजिंग दे दिया, तो आई विल सी अ फ्रेश bear attack on nifty, which will drag nifty to 20,900. ठीक है। so this is what I'm expecting positionally. Okay, not tomorrow, not day after. It is positional target. ठीक है। So this is on Nifty. I am telling you the Nifty analysis first because most of the trades which we did was on Nifty today. Bank Nifty we did one trade. I have uploaded the live session which went on. Please fast forward and see what all I have taught Fibonacci retracement. So understand, try to understand. और अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में डालिए क्वेश्चंस, या फिर आप कल हमारे लाइव सेशन वापस जुड़ सकते हैं, विच इज कंप्लीटली फ्री, and you can ask me directly the questions on it. Okay guys, so now what do I'm expecting a gap up, and if there is a red candle here in gap up opening, then we will mark the high and low of this 5 minute candle, और जिस तरफ भी ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट दिया उस तरफ हम ट्रेड करेंगे विथ अ 10 to 15 पॉइंट का स्टॉप लॉस. Okay, tomorrow in nifty, sorry, not bank nifty, it is in nifty, specifically in nifty. ठीक है।
सो अगर इसने ब्रेकडाउन दिया इस लेवल का, तो वी विल सी अनदर फॉल, एंड दिस फॉल विल ड्रैग निफ्टी टू 21,425। ओके, यहां तक गिर सकता है मार्केट अगर इसने फर्स्ट कैंडल के लो को ब्रेक कर दिया तो। आई एम रिपीटिंग, इफ इट ब्रेक्स द 5 minute first candle low, then we will see a fall till 21,425. And if it breaks the high of that 5 minute candle, we will see 21,600 tomorrow itself. Okay, so that is what tomorrow, all eyes on Nifty, because Nifty is gonna rock. Coming to Bank Nifty mein, the major resistance level is now turned to be 46,450. ओके, दिस इज योर मेजर रेजिस्टेंस लेवल राइट नाउ। इसमें क्या हुआ है, आपका जो आज का सीपीआर है विल एक्ट एज अ मेजर रेजिस्टेंस। ठीक है, it will try to break today, but it fell 700 points. It went up again, it fell down, and then now again it will try to go up. In gap up opening, it will try to make double top, which is yesterday's high, and it will try to break previous day high, but eventually it will fall. ठीक है, so I am bearish in Bank Nifty, and Bank Nifty will drag Nifty also, but tomorrow it will be a gap up opening, and then we will see a fall in market till 45,500 levels. Okay, I am expecting market to fall up to 45,300 levels. Okay, इसके नीचे बड़ा खाड़ी है, but 45,500 is what you have to check. इसके नीचे 45,300, एंड फिर 45,300 से लगा के 45,000 का जो जोन है, 300 पॉइंट का जोन है, इट विल बी फास्ट। तो यहाँ पे 45,300 के नीचे वी विल सी अ फास्ट फॉल टू 45,000। ठीक है, दिस इज द ट्रेड विच आई विल डू। तो जब भी अगर आप 45,300 या 350 के आसपास आता है, हमारे लाइव जुड़िए। लाइव में आपको मैं स्ट्राइक प्राइस देता हूँ, कैसे स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट करते हैं वो भी दिखाता हूँ, और क्यों सेलेक्ट करते हैं, दैट विल ऑल बी बेस्ड ऑन लॉजिक। कोई भी हॉच पॉच नहीं है, कोई भी टिप नहीं है यहाँ पे, एवरी ट्रेड इज विथ लॉजिक। तो अगर आप ट्रेड टिप से परेशान हो तो ज्वाइन हमारा फ्री लाइव सेशन। ओके, हम प्रीमियम ग्रुप के लिए फोर्स नहीं करते हैं, हमारा कोई प्रीमियम ग्रुप है नहीं। ऑफ कोर्स देयर इज सम चार्जेस व्हिच वी टेक, बट नॉट इन लाइव। आपको लाइव में जुड़ने के लिए और मेरे साथ बातें करने के लिए इट्स कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है गाइस, तो टुमारो वॉच आउट फॉर प्रीवियस डे हाई विच इज टुडेज हाई। अगर इसको ब्रेक दिया तो वी विल गो एंड टच 46,377। ओके सॉरी, ये थोड़ा स्मूथ नहीं है। ओके, सो अगर इसने प्रीवियस डे हाई को ब्रेक किया तो देन वी विल कम टू 46,377 से लगा के 46,450 का जोन। ओके, तो एग्जैक्टली इस यहाँ पे होवर करेगा, और इसके ब्रेकआउट पे अपन 46,700 1050 तक का ट्रेड करेंगे। दिस इज अगेन अ 300 पॉइंट रेंज। सो कल के दिन में 300 पॉइंट्स इन निफ्टी, 300 पॉइंट्स इन बैंक निफ्टी, अच्छा ट्रेड मिलने वाला है। तो tomorrow we are gonna be it will be a trending market. Tomorrow is Sensex expiry, so we will do a lot of Sensex trades. And guys, watch out for my next week plan. Next week I am gonna give stock specific calls which are meant only for the budget session. It will only be for a budget session. Okay, so budget special I am gonna do it. However, आप हमारे फ्री लाइव जुड़ सकते हो। I will charge for the budget session. Of course, I will charge for budget session, but I will ensure that everybody's money, how much I charge, will be recovered to you. Okay, guys? चलो ठीक है। Thanks a lot for joining in. Please like, subscribe, and share the video, and please join our Telegram channel. Okay, thank you.